Hello students, let's complete a roadside stand के question answers and the roadside stand was written by Robert Frost. चलिए, so first the short questions. Give examples of contrast and irony in the poem. So the use of expressions the greedy good doers. So जो आपने greedy good doers and beneficent beasts, right? So beast है यानी कि शैतान और बेनिफिशिएंट. सो शैतान बेनिफिशिएंट कैसे हो सकता है, आपको फायदा कैसे दिला सकता है? ग्रीडी मतलब लालची, और गुड डूअर्स जो आपके लिए भला चाहते हैं. सो लालची भले कैसे हो सकते हैं, राइट? सो दीज आर द कंट्रास्टिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द चैप्टर. सो ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट beasts of prey beautifully bring out the use of irony and contrast by the poet. द मेन इन पावर, ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए गए हैं? जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग पावर में हैं वहां पे. सो द मेन इन पावर पोज टू बी द बेनिफैक्टर्स, वो दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं, वो गुड डूअर्स हैं, राइट? वो आपका फायदा चाहते हैं ऑफ द पुअर पीपल. इन रियलिटी लेकिन दे आर ग्रीडी फॉर पावर, वो लालची है पावर के, एंड एक्सप्लॉइट द रूरल मासेस फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, और रूरल लोगों को वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, right? So are politicians genuinely interested in the betterment of the countryside? क्या लगता है कि क्या वो सच में कंट्री साइड के बेनिफिशिएंट के लिए उसके उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं? So politicians are not genuinely interested in the upliftment of the countryside. They shower benefits on them only during the times of elections. बस जब elections होते हैं उसी के टाइम पे वो उनका फायदा दिखाते हैं. Thereafter they just sleep over the promises. Sleep over the promises का मतलब है जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने promises किए थे, उसके बाद वो उनके पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. They just get busy over in their own lives. And they also teach the poor how to accept their sufferings as part of their destiny. वो पुअर को ये भी सिखा देते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा भाग्य है, ऐसा ही होना है, तो just get away with your destiny. ठीक है? Next question. The roadside stand and the moving cars are a contrast around which the entire poem is woven. So explain. The entire poem, A Roadside Stand, contrasts the utter poverty of the rustic villagers who fail to earn a few pennies and the affluence of the city people. So contrast किन किन के बीच में है? contrast है जो बहुत ज्यादा अटर पावर्टी, पुअर लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके बीच में जो ढंग से कुछ पैसे भी खर्च नहीं कर सकते, प्लस द अफ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी, सिटी पीपल, यानी कि जो लग्जरियस लाइफ में अच्छे खासे लोग जो रह रहे हैं, द वेल ऑफ पीपल, द रिच पीपल. द पोएट हैज प्रेजेंटेड द ग्लेयरिंग गैप थ्रू द सिंबल्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड denoting poverty and the cars denoting luxury. तो वो जो old shed दिखाया है, that is denoting the village people, the villagers, right? Whereas the cars moving, the cars rushing from the cities, in the cities, that is denoting the affluent society, the affluent part of the society, right? Next, does the poet reach a conclusive solution for the issue at hand? The conclusive solution provided by the poet is that the poverty stricken villagers will themselves have to ameliorate their lot. Ameliorate का मतलब है उन्हें अपनी कंडीशन खुद ही बेटर करनी पड़ेगी, right? To make better. सो ये क्या कंक्लूजन है कि जो आपकी पावर्टी है, आप लोगों को खुद ही एक साथ मिलके अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. एज द सिटी पीपल आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स देम, बिकॉज सिटी के जो लोग हैं वो उनकी तरफ कुछ अलग बिहेवियर रखते हैं. द कंट्री मैन शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सपोर्ट फ्रॉम देम, nor can anybody relieve them from their plight. उनका जो दुख दर्द है उससे उन्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है in one stroke. So villagers should strive for their economic growth ongoingly. उनको अपने लिए काम खुद ही लगातार करते रहना पड़ेगा. Next question. Imagine you are Pablo Neruda of the poet Keeping Quiet. Now, what advice might you offer to Robert Frost, the poet of Roadside Stand, in the context of his conflicted emotions as displayed in the given lines? और वो lines क्या हैं? The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country.
seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, right? Pen down your advice in a letter to Frost. So आपने पेब्लो नेरेडा ने ये लेटर एक पढ़ा, ये लाइंस पढ़ी और तब वो एक लेटर लिख रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. चलिए, सो आपने कहा थोड़ा सा एड्रेस डेट और आपने एक फॉर्मेट बनाया लेटर का. आई रिसेंटली रेड योर पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड वाज स्टक by the conflicting emotions expressed towards the end. I understand that it can be difficult to make decisions when we are overwhelmed by our emotions. In my own experience, I have found that taking a silent self introspection can be very helpful in gaining a deeper understanding of the situation and in connecting with ourselves as well as others. I try to convey this message in my poem Keeping Quiet. तो वो अपनी पोएम जो कीपिंग क्वाइट है उसका भी रेफरेंस इसमें दे रहे हैं. I would advise you to be still for a moment, because उन्होंने कीपिंग क्वाइट में भी अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने बोला था कीपिंग क्वाइट में कि लेट्स बी क्वाइट फॉर टिल आई काउंट 12, राइट? सो वही चीज वो एक्सरसाइज फ्रॉस्ट के साथ भी करना चाहते हैं, that he is advising to be still for a moment and to contemplate before making any decision about the fate of the people at the roadside stand. It will help you to understand their struggles and pains objectively. You will also gain a new perspective about your own place in the world. You can then reach a more practical decision. I believe that this moment of reflection could help you to see beyond your conflicting emotions. As humans, we must try to connect with our own selves before resolving the issues of others in an exciting manner. I hope this advice is helpful to you. Please let me know if there is anything else I can do to support you. So, this is one writer writing a letter to another writer, just to calm down his plight, because he was really sad looking at the conditions of the villagers there. Next question. Do you find any affinity? Affinity means a bit of similarity in the themes of the poem A Roadside Stand and a chapter Lost Spring, right? So answer in 120 words. All your questions, the long answers has to be between 120 to 150 words. So although Robert Frost's poem A Roadside Stand revolves around country folk and Lost Spring by Anise Young, deals with the slum people, particularly children of Simapuri and Firozabad, there is an affinity between their themes. Themes में क्या है? Themes में है poverty. तो दोनों का जो affinity है similar. So both project the abject poverty which causes misery, right? So abject poverty जो है वो उनका एक common theme है which causes misery to the victims anywhere in the world, be it a slum colony or a bangle makers area in India or a poor village in even USA. However, the pangs of poverty is similar in both the situations. There is no hope of a bright future in both the cases. So the children of the roadside stand owners are certain to have a bleak future. उनका कोई बहुत bright future नहीं है, just as children in Firozabad do. Let's continue this answer. Just as the village folk crave for city money, Sahib in Lost Spring in a slum in Simapuri picks garbage and tries to earn some money. Many children like Mukesh, तो आपने दोनों characters के बारे में जो उसमें chapter में था उनको यहाँ पे reference दिया है. So many children like Mukesh, the bangle maker, have to work at furnaces to make glass bangles. The pain of poverty is universal, whether it is in USA villages or it is in villages of India. Whatever the background, the deprived poor people have to lead miserable lives, devoid of all the comforts and luxuries with their rich counterparts enjoy. Rich counterparts enjoy means जो उनके साथ के rich लोग हैं वो enjoy करते हैं comfortable living and the luxuries, whereas these people they do not. The rich people are least concerned, sorry, at least nahi, they are least concerned about their poor fellow human beings.
राइट. सो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स फ्रेम किए हैं आपके लिए, बिकॉज ये जो थीम्स में कॉन्ट्रास्ट है, थीम्स में सिमिलैरिटीज है, तो ये डेफिनेटली आजकल ट्रेंड है कि आपके एग्जाम्स में ये वाले टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं. और इनको आपको कैसे आंसर करना है, फ्रेम नाम बिटवीन 120 टू 150 वर्ड्स, वो स्मार्टली करना है. उनके आपके ऑथर्स के नाम लिखने हैं, चैप्टर के नाम लिखने हैं, उसमें जो उनके कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे और उनकी थीम्स के ऊपर दोनों के, वो भी हमें जरूर डिस्कस करना है. right, so I have tried my best to give you the answers, लेकिन फिर भी if you find any problem or if you find any other question that you're not able to frame the answer, do let me know in the comment section. Thank you.